हम आज समागम 2024 के दूसरे सत्र की शुरुआत करने वाले हैं। मेरा समस्त साथियों से विनम्र निवेदन रहेगा, सर्वप्रथम हम इस मंच के माध्यम से आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं जो कल हमारे साथ समागम के उद्घाटन दिवस पर यहाँ पर उपस्थित थे। उसी के साथ में जो नए साथी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज यानी 28 सितंबर 2024 को हम आप सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं। संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि समागम 2024 विशेष सहयोग वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, मिशन लाइफ एवं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के सहयोग के बिना संभव नहीं था। हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। समागम पहल पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी एक साझा प्रयास है एक्सिस बैंक फाउंडेशन एवं प्रदान संस्था का। तो ये आप दोनों के का जैसा मैंने कहा एक साझा प्रयास है। और एक बार पुनः जो हमारे समस्त CSO पार्टनर्स जो कल भी उपस्थित थे, आज भी उपस्थित हैं, आप सभी की मैं जानकारी में आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। लगभग 50 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स प्रदान संस्था के आप सभी दूर दराज से दिल्ली पहुँचे हैं इस समागम का हिस्सा बनने के लिए। हम आपके आभारी हैं। आप हमें जो ज़मीन पर काम करने की शक्ति मिलती है उसमें आप लोगों का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। आज के दिवस की जो मोटी मोटी रूपरेखा है उसे भी मैं संक्षेप में आपके साथ साझा करूंगा। 2 पैनल डिस्कशन हमारे होंगे। कल हमारे 3 पैनल डिस्कशन हुए थे, तो जो 2 पैनल डिस्कशन हैं, एक संसाधन, पैसा और फंडिंग को लेकर कि किस तरीके से जो विषय है हमारा, और विषय आपके समक्ष यहाँ पर है कि जो जलवायु परिवर्तन में जो वर्तमान की जो चुनौतियाँ हैं, आज की चुनौतियाँ हैं, और भविष्य को लेकर जो कल भी बात हुई थी कि हम सब लोग सामूहिक तौर पर किस तरीके से अपनी कमर कस सकते हैं इस जलवायु परिवर्तन के मिशन में, उससे लड़ाई के मिशन में। तो ये जो हमारा विषय है, इसको लेकर के फंडिंग, और जो आज का जो हमारा दूसरा जो पैनल डिस्कशन रहेगा वो इन तमाम चीज़ों को एक जगह लाने का, एकीकृत करने का एक प्रयास होगा। इसके अलावा हमारे 2 स्पेशल एड्रेसेस हैं, और हम आपका आदरणीय श्री शैलेश कुमार जी का, आप सचिव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर आपकी जिम्मेदारी है, ग्रामीण मंत्रालय, भारत सरकार। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री शैलेश कुमार जी का आपका स्वागत है। इसी के साथ में हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं, डॉक्टर VB पटेल साहब, आप असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर ICAR से हैं। तो आपके विचार हमें सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और जो स्पेशल सेशन हम कह सकते हैं, हमारे बीच में कुछ युवा उद्यमी हैं, और उसका जो नाम दिया गया है उस सत्र का सॉल्यूशंस एट वर्क, तो एक उसका भी है। हमारी जो कम से कम हमारे जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उसके अनुसार 2:30 बजे के आसपास लंच, यानी हम भोजन के साथ में, ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि हम आप लोगों के साथ में भोजन करेंगे और समागम 2024 का समापन भी करेंगे। उससे पहले 12 बजे के आसपास लगभग एक टी ब्रेक होगा। मैं परिचय भी कराना चाहूँगा। ये मंच के संचालन की जिम्मेदारी हम 2 लोगों को सौंपी गई है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। तो मेरे साथ में मेरी साथी हैं यहाँ पर, को होस्ट आप शर्बानी हैं, श्रीमती शर्बानी बोस, और मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुंतलिका कुंभकार जी को। आप लीड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस न्यूट्रिशन प्रदान हैं, लेकिन उससे पहले 2 फिल्में, 2 छोटी छोटी फिल्में आप देखिएगा और उसके बाद में हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।
चल चले साथ साथ, जुड़कर चले साथ साथ, थामे उम्मीदों का हाथ अब चल चल चल। चल चल चले साथ साथ, जुड़कर चले साथ साथ, थामे उम्मीदों का हाथ अब चल चल चल। निकले इरादों की टोली लिए हम करें एक दूजे को शक्ति प्रदान। रातों के चेहरे भुलाने हैं हमको, नए राग सुबह के गाने हैं हमको, बदलाव की फौज कदमों में लेकर नए रास्ते भी बनाने हैं हमको। नई उस तलवों को छूकर कहे कि ये है नया एक प्रभात। चल चल चले साथ साथ, जुड़कर चले साथ साथ, हमें उम्मीदों का हाथ अब चल चल चल। चल चल चले साथ साथ, जुड़कर चले साथ साथ, हमें उम्मीदों का हाथ अब चल चल चल। कैसे चल पाओगे, इस आंधी में कैसे संभल पाओगे, मगर हम तो सच्ची सी बारिश लिए, आशा लिए, मन में कोशिश लिए, समंदर की लहरों से उठ जाएंगे, लिए हौसले हम तो लहराएंगे, हमसे ही होगी शुरुआत। चल चल चले साथ साथ, जुड़कर चले साथ साथ, हमें उम्मीदों का हाथ अब चल चल चल। निकले इरादों की टोली लिए हम करें एक दूसरे को शक्ति प्रदान। चल चल चले साथ साथ, जुड़कर चले साथ साथ, हमें उम्मीदों का हाथ अब चल चल चल। चल चल चले साथ साथ, जुड़कर चले साथ साथ, हमें उम्मीदों का हाथ अब चल चल चल। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। My dear Prakriti, remember what you have to do on earth? Yes, Mother. I will educate people with love so that they understand mission life and maintain the environmental balance by adopting environment-friendly lifestyle. My child, these three things will help you on your journey. First is the tiara of flowers. This will keep you happy and energetic. Second, this badge of life, which will remind people of life, lifestyle for environment. You can also give this badge to people who contribute for the betterment of our planet. And third, this bag of hope. Whenever someone harms the environment, you can take out eco-sustainable alternatives from the bag and inspire them to adopt Mission Life. Okay, Mother. Now I will leave for my mission life. There's one life, but there's one mission. Let's all work for environment, rejuvenation, beloved planet's protection. Adopting environment-friendly lifestyle is our ambition. Say no to single-use plastic. Let's use stairs instead of lift. Save water, segregate waste, reduce overconsumption and reuse again. Together we can, together we will, together we will achieve this ambition. There's one life, there's one mission. Let's all work for environmental rejuvenation, beloved planet's protection. Let's choose life for green planet vision. The first one was the Pradhan anthem,
which has been written by Prasoon Joshi. And the second one is what is the mission of life. I think the whole Samagam, we are talking around it. And if you look at the yesterday's conversation, कल की बातों को अगर सुने तो कहीं पे वो lifestyle शब्द हम लोगों ने काफ़ी बार सुना, और इस मिशन का we are a part of that. तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है मुझे. 8 घंटे का जो चर्चा, इतना रिच, इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आए हैं, सबको समाहित करके 10 मिनट में बोलने का मेरे को ग्रेस दिया गया है 5 मिनट का. मैं कोशिश करूँगी 10 से 12 मिनट में बोलने का. तो हम लोगों ने शुरू किया था, पहला हमारा कीनोट सेशन था. So in that we heard about a very important point about decentralized community action being foundation to the transformation, and we heard about the change in a data-based thing, that where with the change in the HDI has happened in states like Sikkim and Kerala, where we have experienced decentralized community action has happened. Second, the highlight was also on the impact that could be brought if social capital were given space to use their full potential. So that was one other point. And I think climate action is just not limited now to glaciers, but it has reached our चौखट. हमारे चौखट तक आ गई है climate action, और इसीलिए शायद यहाँ पे ये social capital की potential की बात हम लोग कर रहे थे. और हमने बोला कि यहाँ पे एक impactful change अगर हमको लाना है, then the civil society action has to strengthen decentralization. ये हम लोगों ने सुना अमरजीत सिन्हा सर से. ध्रुवी ने हाईलाइट किया, बहुत ही एक क्लाइमेट एक्शन सुनने से और उसकी सारी आयामों को समझने से बहुत एक डॉन्टिंग सा लगता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ लगता है, बट आई थिंक शी इज़ फोकस्ड ऑन गोइंग बैक टू द बेसिक्स, एंड दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. व्हेन वी आर कन्फ्यूज, वी आर फीलिंग थिंग्स डॉन्टिंग, लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स. एंड आई थिंक द क्रॉस एक्शन एट ग्रास रूट्स इज़ इम्पेरेटिव टू even preserve the future. And we have to act on interventions with ripple effect. I think that was something that Dhruvi emphasized on. And another was that to ensure that stable income with a basket of livelihood activities with surplus. And once we stabilize the present, it will inspire to think about future. If you don't stabilize the income and everything present, now crisis, attend to that, I think thinking about the future is just not possible. So the immediate, if we take care of the immediate, inspire, we think about future. Another was important aspect was the CSO community funders coming together in partnership. So this was some of the highlights that Dhruvi has brought in. And we heard an inspiring journey from Chami Murmuji, and she and her community has till now been planting 30 lakh trees, and they are going on. And another interesting experience from her was that how they are evolving as they are engaging more and more, their ideas are evolving. और वो अभी क्या है, पहले अकाशिया से शुरू किया, अभी डाइवर्सिफाइड कर दिया है, साल, सागवान, यहाँ तक कि अभी फल मूल के पौधे भी उन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं. We had a very, very enriching presentation by Dr. Shrikant Panigrahi. So much, it spoke about the multi-dimensional approaches already in the play to mitigate the climate action, right from nature-based solution to responsible social environment, economic sustainability to decentralized community-based solution. So, you know, you were talking about green GDP, resource efficiency. So all this was a kind of a very informative, very insightful examples that he has given there. And also that the warning he said, you know, that the way we are going, you know, we are looking forward to consuming 2 earths. You know, it just speaks about the crisis, the highlights the crisis. Consuming 2 earths is just not possible, so take action now. Then we heard Dr. Sujit Bajpayee, and I think that's something interesting. He brought it into the table. We often miss the wetlands in our focus when we talk about the climate action. He explained how the wetlands are the kidney of the ecology, and we need to pull more attention towards the wetland while we are working on thinking about mitigating and adapting in climate action. Then we had a very rich presentation by CEW's Vishwas. I think we could see the changing rainfall pattern across deserts getting flooded, and the areas where there was high rainfall, they are becoming more drought-prone. We also saw how the onset and withdrawal of monsoon, both is shifting. So he spoke about the need to now us adapting to this changing scenario,
need to revise crop calendars on the basis of these changes, and also spoke about the climate resilience and nature-based solutions to meet the national targets that has been set around climate action. The message from Manas was a very, Pradhan's experience on that was shared. He shared that, and he focused on the systems change for climate action. The 3 C's, I think, was the core where he narrated the experience as well as pushing forward that how we need to focus on the 3 C's, community-led initiatives, convergence, and collaboration. Then we went to the session on regenerative agriculture, so advancing regenerative agriculture to address climate action. And we heard about the experience of Babita Didi. She is a champion in herself, and how she insisted, and I think she is also advocating that many women like her, the women champions within the community, can take, and we heard from her example how she has included more and more and encouraging more and more farmers to adopt regenerative agriculture. So they need to create more and more such women champions. We also, I think in the panel, everybody converged on the nature-based solutions. And we heard Shomik highlighting the seed as an integral to regenerative agriculture, and indigenous seeds is an area where we need to put more thrust upon, like we need to focus more on adoption of it, preservation of it, propagation of it. Another important part that I highlight was of what? Mimicking the nature in terms of allocation of land parcels to different activities, like 20% on the water conservation, 5% on livestock, and some for forest. I don't remember the percentage right now, but that's a very unique idea and very interesting idea of managing and bringing in more of the RA, mimicking the nature. People also spoke about knowledge management on that. So this was about the regenerative agriculture. We also had a session on where we were talking about the water crisis. And here the inclusion, we spoke about the different crises, the irrigation, the preservation, the conservation, the rejuvenation in that. And I think there was a couple of points that were very important there, that there was a lot of discussion around the private resource where the water conservation things are happening. Now there was a lot of conversation around how to bring in more community resource building also as a part of this mitigating the water and conserving more water. There was also importance on including the Panchayati Raj institutions and women leading the planning. So the whole engagement around Gram Panchayat development plan and water conservation as a part of it. There was also a focus on bringing in more innovative community-based solutions. And there was also one thing that came up in that, actually one of the examples also that came about, the availability of water and the crop planning. We heard an example from, I am forgetting the name, it's, so we also heard from a direct experience from our women representative here, Naseem ji, that how the crop planning now, whatever the available water is there and planning the crop accordingly. So that is more about innovative community-based solutions it came. Another focus was on the capacity building right at the systems level to the community level. That was on the water. And the last session was around forest. And I think it was spoken more about forest not seen as an isolation, but forest as a part of the landscape. And I like that quote, and I would repeat it because it itself speaks about how the forest needs to be seen. If you see a tree, you cannot see the forest. And if you see the forest, you cannot see a tree. I think that speaks about how we want to see the forest, like river, land, water bodies, smaller water bodies, trees, plants, everything comes together. And there, another important angle that was discussed about is community as a custodian of the forest and the common land, especially the women and their role in it. So there was this, along this line, we spoke about the preserving traditional knowledge and practices and how the cultural rights and forests are so integrated and embedded together. Another very important aspect that came up as the time perspective while talking about restoration, eco-restoration, forest restoration, how the time, 3 years, 10 years, 15 years, 20 years, so keeping aware of that, and as well as some of the financing models that were discussed, and I think it all led to about converging towards a more eco-restoration policy kind of thing to be brought in forward. That I would say was a part of the forest panel discussion. Before I end,
let us not forget about the Antim Jan. It helped us to realize that climate action is just not impersonal. It is not physical. It is about person and personal. It helped us, Jaya and her team helped us to bring in our personal connection to it, the web of life that we all experienced. And I think it spoke about our own personal requirement, our own requirement of personal commitment, passion, and involvement in the whole climate action to change the scenario. Thank you. I just tried to summarize the entire day yesterday. Thank you very much. Over to Sarbani for the next session.